Good afternoon, students and faculty members. So today we will discuss binomial approximation. So till now we have discussed binomial expansion. So today is the topic of binomial approximation. So before we start, I will like to give you the same expansion which was binomial expansion. Binomial expansion. What was the formula? What was the expansion? It was when for say 1 plus x raised to power n, it was nc0 1 plus nc1 x raised to power 1 plus nc2 x square plus nc3 x3 plus nc4 x4 and so on. Last is nc1 x raised to power n. This was the binomial expansion where n is any positive integer. This is very important line here. ਜਦੋਂ n ਤੁਹਾਡਾ positive integer ਹੈ, and then this is the formula for binomial expansion where NCR is your n factorial upon r factorial and n minus r factorial. So just keep one thing in mind, this formula when this n is positive integer. Positive integer means when n is say 1, 2, 3, 4, 5, any number. Positive but integer 1, 2, 3, 4, 5, any number. So this is binomial expansion when n is positive integer. We can also write a binomial expansion when n is negative integer or a rational number. When n is a negative integer or rational number, then NCR cannot be used. क्योंकि negative what is NCR? NCR is n factorial upon r factorial into n minus r factorial. For negative n we can't expand NCR. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ n negative ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ rational number ਹੋਏਗਾ, then ਇਹ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਦ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ? then binomial expansion, binomial expansion or theorem can be written as ਜਦੋਂ n ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਟ ਬਿਕਮਸ 1 plus x raised to power n, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 plus ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ n ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ into x plus n into n minus 1 upon 2 factorial x square, then n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial x raised to power 3 plus n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 upon 4 factorial x raised to power 4 and so on up to infinity. ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ for binomial expansion. ਲਾਸਟ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? we have NCR in the form of NC0, NC1, NC2, but now in this form 1 plus nx plus n into n minus 2 so on, where keep in mind where n is negative integer है,
ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੋਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋਟ ਇਜ਼ x should be less than 1 numerically, less than 1 numerically. What is the meaning? जो x है, x should lies between -1 and 1, or it can be written as mod x should be less than 1. ਜਦੋਂ ਇਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਐਂਡ -1 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਟੂ ਨੋਟ ਇਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ, ਫਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ 1, फर्स्ट टर्म ਕਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਰਮ, ਜੇ 1 plus x raised to power n, ਇਹ ਫਸਟ ਟਰਮ, ਦਿਸ ਫਸਟ ਟਰਮ should be always 1, ਇੱਥੇ 1 plus x something ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ x, this x should be less than 1, this x should be less than 1, ਅਗਰ if x is not less than 1, फिर की happen, what will happen if s is not less than 1, then we will get strange answer। जे x एक तो छोटा नहीं है, x is not less than 1, तो अपने को strange आंसर आने शुरू हो जाएंगे। for example by using your this formula binomial expansion, say what is your 1 plus x raised to power -2, what is the formula for 1 plus x raised to power -2? so clear jada n hai the here n is -2, which is a negative integer, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੋਗੇ, 1 plus n, here n is -2 into x plus n into n minus 1 upon 2 factorial x square plus n into, what is n here, what is n here, -2, n into n minus 1, n minus 2 upon 3 factorial x cube plus so on up to infinity। एक चीज और देखो ध्यान नाल, why it is up to infinity, ये up to infinity ही क्यों जा रहे हैं, रोको क्यों नहीं रहा, because when n is your negative, और a rational number, ऊपरली टर्म कदे भी जीरो नहीं हो पाएगी, this term can never be zero or finite, so it will last long up to infinity, so up to infinity चलता रहेगा। now try to put अपना x की होना चाहिए, this x should be your less than 1, now try to put x as a say 2, then what will happen, it becomes 1 plus 2 raised to power -2 is equal to 1 minus 2 into 2 plus -2 into -3 upon 2 factorial, which is 2 into 2 square plus so on, so एक ही बन गया 3 raised to power -2, it becomes your 1 minus 4, it becomes your plus 3 into 4 12 and so on, so it means 1 by 9 is equal to 1 minus 4 plus 12 plus and so on, which is wrong। इसे करके कह रहे हैं this x, so that's why x should lies between -1 and 1, it is very important point to note that x should be your lies between -1 and 1। so we will discuss some particular cases, what we know that
वी नो दैट जो अपने पास फार्मूला है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, व्हाट इज द फार्मूला, वेयर फॉर वी नो दैट फॉर ए नेगेटिव इंटीजर और irrational n, तो व्हाट इज द फार्मूला, अगर नेगेटिव इंटीजर है या रैशनल है, फार्मूला इज 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x cube and so on. Call this as a equation number 1. So this formula is known to us. Now change n to minus n in equation number 1. Change karo n nu by minus n. What will happen? It becomes your 1 plus x raised to power minus n. It becomes your 1 minus n x, because you are changing n by minus n, plus minus n into minus n minus 1 upon 2 factorial x square plus minus n minus n minus 1 minus n minus 2 upon 3 factorial x cube and so on. We are just changing n by minus n. So what you will get? 1 minus nx माइनस इथों कॉमन आ जाएगा कि एक माइनस कॉमन फ्रॉम हेयर, माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स योर प्लस, सो इट इज प्लस एन, बिकॉज इथों एन माइनस 1 कॉमन ले चुके हैं, इट बिकम्स योर एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर. इथों एक माइनस आएगा फ्रॉम माइनस 1 फ्रॉम हेयर, माइनस फ्रॉम हेयर 10 माइनस होंगे तो क्या बन जाएगा हेयर माइनस, इट बिकम्स योर एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन. सो ये फार्मूला बन जाएगा जदों पावर की अपने पास माइनस एन, वेयर पावर इज माइनस एन. की फर्क आ रहा है दोनों फार्मूला, हेयर 1, हेयर इट इज 1, हेयर इट इज माइनस एन एक्स, it is minus n net, it is plus nx. Here we have n into n minus 1, it is n into n plus. Same here, it is n into n minus n plus, n minus 2 n plus 2 and so on. एक चीज और की और है, इथे साइंस अल्टरनेटिवली इट इज नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेटिव साइन आएंगे and plus 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 everywhere. Also now change x by minus x in equation number 2. तक ही आएगा अपने पास, x नु तुसी चेंज कर रहे हो by minus x, it becomes your 1 minus x raised to power minus n is 1, x नु तुसी लिख रहे हो by minus x, n into n plus 1 by 2 factorial minus x whole square minus n into n plus 1 n plus 2 upon 3 factorial minus x cube and so on. तो क्या बनेगा, this becomes 1 minus minus into minus plus, it becomes nx, इथे minus x whole square, it becomes your positive, n into n plus 1 upon 2 factorial x square, it is x raised to power minus 3, minus common आएगा तो minus minus already here, so it becomes your plus n into n plus 1 into n plus 2 upon 3 factorial x cube and so on. ये सारे की बन जाएंगे प्लस प्लस दे बन जाएंगे. Here it is plus from plus here plus here plus here and so on. It means this is your equation number 3rd. So in particular तो अपने पास दो फार्मूलाज बन गए, इट इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1, उसे पुट करो फॉर व्हेन पुट n एज ए minus 1 in equation number 2, तो क्या बनेगा अपने पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1, ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 5
plus x raised to power 6 and so on up to infinity. ये फार्मूला बन जाएगा, which is very very important to remember. ये तुसी याद रखना फार्मूला, because you will use this formula directly. अगर तुसी पुट करोगे, put n is equal to 1 in equation number 3rd, तो की बन जाएगा फार्मूला, it becomes your 1 minus x raised to power minus 1. So एक ही बनेगा अपने पास. So put here plus 1, n as a plus 1 in equation number 2. तो फार्मूला की बनेगा 1 plus x square plus x cube plus x raised to power 4 plus x raised to power 5 plus x raised to power 6 and so on up to infinity. So these are two formulas which are very very important, because you will use these formulas directly in your examples. अगर इधर प्लस है, if you have plus here, for this plus and this minus, alternative sign आएंगे, for this minus and this minus, plus plus plus. So these are your important formulas. So next is approximations. ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ. ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ we can find approximate value of a given function using binomial expansion. So we know that what is binomial formula of expansion? It is 1 plus x raised to power n it is 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial x square and so on up to infinity. ये अपन फार्मूला पता है. This is the formula binomial where very important, जो x है, x should be lies between -1 and 1. ये कदे नहीं भूलनी चीज़ तुसी कि x should lies between -1 and 1. अगर x is lying between -1 and 1, it means x is very small number. So if x is so small, x इतना ज़्यादा छोटा है that its square and higher powers may be neglected. तब अपने पास क्या आएगा, क्योंकि x लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, x छोटा है ही है, नो डाउट. अगर x इतना ज़्यादा छोटा है फिर तुसी x स्केलर टर्म्स ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਪਾਵਰਸ x क्यूब x4 x3 x5 ਸਾਰੀਆਂ अगर सारियां ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, इट मीनस x स्केलर वाली टर्म ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, इट इज x क्यूब हेयर, ये सारी टर्म्स अगली सारी टर्म छड़ सकते हो. तो की बनेगा, देन व्हाट यू विल गेट 1 प्लस x रेज टू पावर n, की बचेगा सिंपली 1 प्लस nx, क्योंकि तुसी बाकी सारी टर्म्स छड़ती हैं. इसनू बोलते हैं आप विच इज कॉल्ड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और लीनियर अप्रोक्सीमेशन. अगर सेकंड केस, अगर if x is so small that its cube मतलब क्या होएगा, x की पावर 10 and higher powers of x may be neglected. ਤੁਸੀਂ ਕੀ neglect ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, x क्यूब ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ neglect ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀ neglect ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, 1 plus x raised to power n, it becomes 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial x स्केयर तक ही रह जाएगा, क्योंकि क्यूब ਅਤੇ बाकी सारी टर्म्स आप की कर रहे हैं, निगलैक्ट कर रहे हैं. इसमें की करने आप, इट इज कॉल्ड सेकंड
approximation. Second कह लो या it is also called quadratic approximation. इन यूज किमें कर दें. So try to use, for example using binomial theorem, find cube root of 999. So solution. First of all, what is the meaning of cube root? तो इसकी फाइंड आउट करना है. टू फाइंड 999 का क्यूब रूट मीन्स 1/3. This can be written as 999 can be written as 1000 minus 1 the power 1/3. So how you can write? देखो ध्यान नाल, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 1 plus x ਦੀ ਪਾਵਰ n और 1 minus x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, no problem. here we have 1 minus, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ x ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ x, this x should be lying between -1 and 1. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ x assume ਕਰਦੇ ਹੋ, if this is your x, it is 1000 which is very large. ਇਹ 1 and -1 ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ so that x becomes your lying between -1 and 1. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1000 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ 1000 ਲਓ ਕਾਮਨ, it becomes 1 minus 1/1000 raised to power 1/3. 1000 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3. here power is 1/3. 1 minus it is 0.001 1/3. so ये अपने पास x है. this is x and which is lying between -1 and 1. ये obviously जो -1 and 1 चलाई कर रहे हैं, it means तुसी binomial expansion use कर सकते हो. first of all 10 raised to power की बन जाएगी, simply बन जाएगा 10. now use करो. here what is n? it is n is 1/3. now use करो, it is 1 plus n which is 1/3 into x which is -0.001 plus n into n minus 1 upon 2 factorial minus 0.001 square and so on. बाकी सारे छाड़ देंगे because काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा. so this becomes equal to 10 1 minus it becomes your point after simplification it is point and so on. एक बन जाएगा, it is 10 into 0.999669. ये सारे आप छड़ देंगे, बाकी सारे अपन निगलैक्ट कर देंगे बिकॉज इन्ने ज़्यादा छोटे हो जाएंगे तो निगलैक्ट कितने आ सकते हैं. सो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली. क्यों अप्रोक्सीमेटली लिख रहे हैं आप? वाई वी आर रिटिंग दिस वर्ड अप्रोक्सीमेटली? बिकॉज वी आर निगलेक्टिंग all the higher order terms. That's why you get approximate answer. And after simplification, its answer is 9.996669 approximately. मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं. Why we are writing approximately? Because we are using up to second order term. We are using up to square, and we are neglecting all the higher order terms. So that's why we have approximate value. One more example. Example is assuming that x to be small so that its x square and higher powers of x can be neglected
then show that 1 plus 3 by 4 whole raised to power minus 4, x is here, into 16 minus 3x raised to power 1 by 2 upon 8 plus x raised to power 2 by 3 is approximately equal to 1 minus 305 by 96x. Solution. So सुनो ध्यान नाल की given है, x is given to you so small so that it's x square and higher powers of x can be neglected. It means की use करांगे अपन, we will use linear approximation, we will use first approximation. तो किमें यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल की प्रूव करना है अपन, इट व्हाट इज गिवन यू 1 प्लस 3 बाय 4x रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 16 माइनस 3x रेज टू पावर 1 बाय 2 अपॉन 8 प्लस x रेज टू पावर 2 बाय 3. दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 3 बाय 4x रेज टू पावर माइनस 4 इंटू 16 माइनस 3x रेज टू पावर 1 बाय 2 एंड जो पावर डिनोमिनेटर च है इट इज इन डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर च है तब पावर है ओनली 2 बाय 3. जो अगर ऊपर लेके जाओगे इट बिकम्स योर 8 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 बाय 3, पावर की बन जाएगी अपने पास माइनस 2 बाय 3. तो एक ही लिखा है, दिस बिकम्स योर 1 प्लस 3 बाय 4 एक्स रेज टू पावर माइनस 4. चेक करो जो आ गिवन है एक्स स्मॉल है, नो प्रॉब्लम, एक्स स्मॉल. 3 बाय 4 जी वैल्यू है 3 बाय 4 वो भी एक तो छोटी है, इसका क्या जी टर्म है इट इज योर लाइंग बिटवीन माइनस 1 एंड 1. पर इतने 16 है, इतने 3x है. पहले एक दो प्रॉब्लम्स हैं अपने पास, एक तो 1 बनावांगे एंड जी दूजी टर्म बनेगी वो बननी चाहिए अपने तो एक तो छोटी. अगर तुसी 3x कॉमन लेने हो, if you take 3x common it becomes your 16 by 3, it might be large, so take 16 common, 16 कॉमन लो. टोटल पावर कितनी चल रही है अपने पास 1 by 2 चल रही है, इसकी भी पावर 1 by 2 आ जाएगी. इट बिकम्स योर 1 माइनस 3 बाय 16x द पावर 1 by 2 प्लस इंटू इतने भी क्या लो तुम कॉमन 8 कॉमन लो, माइनस 2 by 3 पावर सेम रहेगी. इट बिकम्स योर 1 प्लस x by 8 रेज टू पावर माइनस 2 by 3. तक की बन गया अपने पास 16 रेज टू पावर 1 by 2. इसी वैल्यू की आएगी, इट इज इक्वल टू 4. इस वैल्यू की आएगी, व्हाट विल वैल्यू ऑफ दिस टर्म की आएगी वैल्यू, चेक करो देखो ध्यान नाल. 8 में तुम लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 3, पावर कितनी है माइनस 2 by 3. 3 नाल 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर माइनस 2, एक बन जाएगा 1 by 4. ताकि बन जाएगा अपने पास इट इज 4 इंटू 1 by 4 इंटू 1 प्लस 3 by 4 एक्स रेज टू पावर माइनस 4 1 प्लस 3 1 माइनस 3 by 16 एक्स रेज टू पावर 1 by 2 इंटू 1 प्लस एक्स by 8 रेज टू पावर माइनस 2 by 3. ये कैंसिल हो जाएगा. नाउ वी विल यूज बाइनोमियल यूज करना शुरू करो. एक ही बनेगा अपने पास 1 प्लस व्हाट इज n इज माइनस 4 इंटू 3 by 4x. अगली टर्म नो बाइनोमियल खोलो, इट इज 1 n है 1 by 2 n इंटू x इज माइनस 3 by 16x and so on. Next term is 1 plus n is minus 2 by 3 into x is x by 8 and so on. आप सिर्फ ध्यान दो, we are just writing the term up to x तक ही लिख रहे हैं because अपन given है x square वाली टर्म सारी की अपने पास small नहीं and they can be neglected, so neglect all the higher order terms. So this simply becomes
1, 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, -3x, it is after simplification